started trigonometry a few days back. हमने इसके कुछ basics discuss कर लिए थे. In the last session, we talked about how to solve different kinds of equations. We looked at a number of examples. इसमें क्या करना होता था? सबसे पहले हम ये करते थे basic angle figure out करते थे. Basic angle जब आ जाता था, उसके बाद हम quadrant से देखते थे कौन से regions के अंदर आपके angles हैं वो possible, right? ये हमने एक method देखा था. We did a number of examples on this. You can do this for degrees and also radians. दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है? Interval आपको देखना होता है. Interval के अंदर values देखनी होती हैं, ठीक है? So you have to keep that in mind. फिर हमने देखा there are some equations in which the quadrant method is not going to work. Okay, वो कब होता है जब आपके पास basic angle या 0 आ जाए या 90 आ जाए, radians के अंदर 0 आ जाए, pi over 2 आ जाए, then since it doesn't fall in any of the quadrants, we can't use the quadrant method. तो इसमें आप एक तरीका तो ये होता है आप ग्राफ यूज करते हो, जो हम बाद में देखेंगे, अगर हमने ग्राफ नहीं कर रखी है. तो अभी के लिए आप क्या करोगे, आपके पास जो भी इंटरवल दिया होगा, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है 0 से 360 के अंदर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. अगर इसमें बेसिक एंगल 90 आ रहा हो तो आपने सिर्फ ये करना है कि 90 के सारे 90 आ रहा है और 0 आ रहा हो, इसका मतलब होगा किसी क्वाड्रेंट में फॉल नहीं करता, वो एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर. इस केस में आपने सिर्फ उस इंटरवल के अंदर 90 के मल्टीपल चेक कर लेना है और देखना है उसमें से कौन सा सैटिस्फाई करता है, वो आपका सोल्यूशन आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 0 से 360 आपका इंटरवल था. You just take all the values between all the values like this 0, 90, 180, 270, 360. Just satisfy करता है equation, that's your solution. ये तुम लास्ट टाइम भी किया था ना? ये समझ आ गया क्यों कोऑर्डिनेट मेथड नहीं अप्लाई होता है यहाँ पे? या 0 बेसिक एंगल आ गया, 90 बेसिक एंगल आ गया, तो एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, वो कोऑर्डिनेट से नहीं देख सकते. ASTC जो है दैट डजंट वर्क है. तो क्या करते हैं, जो भी इंटरवल दिया होगा ना 0 से 360 तक, क्योंकि आप एक्सिस के ऊपर लाई करते हो, एक्सिस पे कौन से एंगल्स होते हैं? 0, 90, 180, 270, 360. तो वो सारे एंगल्स जो भी आपके इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, बस आपने इक्वेशन के अंदर इनपुट करने हैं और चेक कर लेना वो सैटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते. तो 0 ट्राई किया, 0 डिड नॉट वर्क. आपको -1 रिजल्ट चाहिए. देखे राइट साइड पे आपको आंसर क्या चाहिए? -1. तो आप वो सारी वैल्यूज इनपुट करोगे, देखोगे किसमें -1 आता है, वो आपका सोल्यूशन आएगा. तो आप इसमें डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं. सारे 90 के मल्टीपल्स 360 से बड़े क्या होते हैं? 450 देख लें, 540 देख लें, सो ऑन. ओके, नॉर्मली जब साइन थीटा या कॉस थीटा 1, 0 या -1 होते हैं ना, तब ये मसला आता है. आप अगर बेसिक एंगल निकालेंगे ना, बेसिक एंगल या 0 आएगा या 90 आएगा. दैट्स गोइंग टू टेल यू के ये वाला केस है. ऑलराइट, तो आपने सिर्फ वैल्यूज चेक करनी है और इनपुट करके डायरेक्टली आंसर लिख देना, कोई वर्किंग नहीं चाहिए होती इसमें. ठीक है, we did these examples in the last session. Now today what we want to do is we want to do some practice questions from the worksheet. लेकिन उससे भी पहले हमें एक और चीज करनी है, उसके बगैर फिर हम अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते. There's one thing that is still left and that's identities. There are some identities that we have in trigonometry जो आपको यूज करनी पड़ती हैं to solve different equations. Okay, now let me write those down here. So we have some identities. Remember identities क्या होती थी? What's the difference between an identity and an equation? अगर आपके पास इस तरह से इक्वेशन है 2x equals x plus 3, this is only true for x equals 3. सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है. It's only true for a specific value of x. अगर कोई आइडेंटिटी है, फॉर एग्जांपल if I have 3x plus 6, that is identical to 3 into x plus 2. ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंट तरीका है उनको लिखने का. एक ही चीज है, उसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है. This is true for all
वैल्यूज ऑफ एक्स। इक्वेशन क्या होती है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए या मल्टीपल वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होती है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, क्यूबिक होगी, उसके 3 आंसर्स हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, बट अगेन देयर आर सम स्पेसिफिक वैल्यूज दैट विल बी द आंसर। आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, जो मर्जी एक्स की वैल्यू डाल, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, राइट। क्योंकि वो एक ही चीज को लिखने का एक डिफरेंट तरीका है, राइट। रिमेंबर दिस, we've discussed this before, जब हमने पार्शियल फ्रैक्शंस किया था, we talked about this at that time as well. Now, why are we discussing this again? Because now we have some identities in trigonometry. Sorry, ये 3 lines लिखी होती हैं, that's an identity. 3 lines लगी होती हैं, 2 lines is an equation. All right. अच्छा, now there are 2 identities that we want to do in paper 1 that are part of the syllabus of paper 1. उसके बाद फिर बाकी P3 में आ रही होंगी, हम बाद में देखेंगे. And they look like this. Sine square theta plus cos square theta. This is identical to 1. And there's another one, and that is that tan theta is identical to sine theta over cos theta. These are 2 identities that we have in paper 1. Now, identity का मतलब क्या होता है? जो आपके वेरिएबल है, उसकी जो मर्जी वैल्यू इनपुट कर दो, उसके लिए हमेशा ट्रू होगा. तो अगर आप ये इवैल्यूएट करते हो for any value of theta, no matter what value of theta you input there, this is always going to be equal to 1. हमेशा 1 रिजल्ट आएगा. As long as these theta values are same. cos में भी जो डाल रहे हो theta और sin में डाल रहे हो, दोनों अगर सेम है, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? रिजल्ट हमेशा 1 आएगा. हाँ, अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना आपके पास कैलकुलेटर में, तो इसका कोई बटन नहीं होता, बिकॉज दिस इज एक्चुअली a short way of writing this thing. Sine theta whole square, this is what it actually is. असल फॉर्म ये है. अब क्योंकि ये बहुत दफा लिख रहे होंगे, बार बार लिख रहे होंगे, तो इसको लिखने का ना एक शॉर्ट तरीका है, वो हम ये है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा. ओके, या सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ये एक्चुअली कोई नंबर नहीं है ना, साइन इज नॉट अ नंबर. इसमें हम पावर अलग अलग लगा देंगे उसके ऊपर. साइन इज अ फंक्शन. साइन इज अ फंक्शन जो थीटा के ऊपर अप्लाई हो रहा है. Okay. ओके, खुद ही से. अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, देखिए, साइन जो है ये एक फंक्शन है, ये कोई चीज है जो थीटा के ऊपर पहले अप्लाई हो रही है, उसके बाद फिर आप जो रिजल्ट आता है उसको स्क्वायर करते हो. ठीक है. अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको स्क्वायर को अंदर किसी तरह से दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो, एक के ऊपर स्क्वायर लगा दो. ये जो राइट साइड पे लिखा है ना हमने, this is not something that is mathematically, something that's defined like this, कि sin square theta इस तरह की चीज होती है. It's just a short way of writing this. ये एक notation है, बस हम यूज कर रहे हैं. ये notation क्या represent कर रही है? ये notation इस चीज को represent कर रही है कि हमारे पास sin theta है और उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं. That's all that it means. ठीक है, ये एक notation है जो sin theta whole square को लिखने का एक short way है. That's all that it is. Okay. उस स्क्वायर से ये चीज नहीं आती किसी भी तरह से. हम तो लॉजिकली कुछ इवैल्यूएट नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी एफर्ट बचा रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर बहुत ज्यादा दफा यूज हो रहा होगा,
वी वांट यूज टू डू दिस ब्रैकेट थिंग अगेन एंड अगेन, बार बार इतनी ब्रैकेट्स नहीं यूज करनी है हमने, तो उसकी वजह से हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। सो देयर इज नो मैथमेटिकल लॉजिक टू इट, सिर्फ नोटेशन है जो हम यूज कर रहे हैं। इज दैट ओके? सो साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर है असल में, ठीक है जी। राफिया क्या कह रहे हैं, अभी देखते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो ये दो आइडेंटिटीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वन आइडेंटिटी and this is another identity. Now let's try to think about this. अगर आपके पास साइन थीटा है और उसका होल स्क्वायर है और प्लस कॉस थीटा है उसका होल स्क्वायर है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर या ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज या y ओवर h जो हमने अभी डिस्कस किया, दोनों में से कुछ भी यूज कर लें। लेट्स से यू रिमेंबर दिस, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज इस पूरे का स्क्वायर प्लस कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर हो गया, सॉरी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है ना, ये एवेल्युएट करके देखते हैं क्या आता है। साइन क्या चीज है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसका अगर एलसीएम ले लें क्या बन जाता है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर क्या होता है, दैट इज hypotenuse square using Pythagoras, right? Perpendicular का square plus base का square, that is equal to hypotenuse का square. So hypotenuse square over hypotenuse square, what does that become? That is 1. Now it doesn't matter what the value of theta is, result हमेशा end पे 1 ही आ जाता है. So that's where this identity comes from. Sin square theta plus cos square theta, that is identical to 1. अब ये एक identity है, ये हमेशा true है, no matter what the value of theta. देखिए आपने theta की value नहीं input किया हमने कोई भी, जनरल एक फॉर्मूला लगाया, इवेंचुअली दैट रिजल्ट्स इन 1. बस दोनों में सेम होनी चाहिए, ऑफ कोर्स. इज दैट ओके? सो दिस इज आइडेंटिकल टू 1. सिमिलरली वी गॉट अनदर वन, tan थीटा इज आइडेंटिकल टू sin थीटा ओवर cos थीटा. अगर उसको हम राइट साइड से देखें, sin थीटा ओवर cos थीटा इवैल्यूएट करके देखते हैं ये क्या चीज आती है. sin कैसे डिफाइंड होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, cos इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएंगे, है ना. What are we left with? Opposite over adjacent, and what's that? That is tan. So sin over cos is the same thing as tan. आपका tan होता है. Is that okay? तो ये हमारे पास दो आइडेंटिटीज हैं, sin square theta plus cos square theta identical to 1 and tan theta identical to sin theta over cos theta. Now this is what is important. Identities आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला शीट में भी दी होती हैं, but you'll realize कि you will start remembering these anyway. जब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद होना शुरू हो जानी चाहिए, ओके. और ये आपको इवेंचुअली अपने जहन में रखनी है. सो यू डोंट हैव टू बी वेरी रिलायंट ऑन फॉर्मूला शीट फॉर दिस, अदरवाइज फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर सकेंगे. आपको ये याद नहीं चाहिए. दैट्स द ओनली वे you'll be able to figure out questions in a reasonable amount of time. Otherwise आप फॉर्मूला शीट पे डिपेंडेंट होंगे, बहुत ज्यादा आपको टाइम लग रहा होगा उसको फिगर आउट करने में. तो आपको ये याद करनी है, ठीक है. Sin square theta plus cos square theta, that's identical to 1. Tan theta is identical to sin theta over cos theta. ये दो चीजें आ गई. अब ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है ना, इसको यूज करके there are two other things that come which we will be using a lot in both P1 trigonometry and P3 trigonometry. इसको अगर आप रीअरेंज कर लो तो हम कह सकते हैं sin square theta is identical to 1 minus cos square theta.
तो अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो और आपने उसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, दिस इज व्हाट यू कैन डू दैट, दिस इज व्हाट यू कैन डू देयर। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा can also be written as 1 minus sin square theta. So this is something that we'll be using a lot. हमें कभी कहीं पे cos square को sin square में convert करना होगा, sin square को cos square में convert करना होगा. This is what we can do for that. All right. Sin square की जगह लिख सकते हैं 1 minus cos square. Cos square की जगह लिख सकते हैं 1 minus sin square. Make sense? What about this, Ibrahim? ये भी तो कर सकते हैं sin theta plus cos theta. तो squares खत्म कर दें, square root ले दोनों sides के ऊपर. That gives you sin theta plus cos theta equals 1, right? Yeah. You can't do that. ये नहीं कर सकते, ठीक है? This is not true. ये नहीं करना. क्यों? होल स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर रूट आपके ऊपर पूरे पे लगा ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था ना। अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इस पूरे का करेंगे, अब ये स्क्वायर रूट अलग अलग टर्म्स पे तो नहीं जाके अप्लाई होगा ना। प्लस हो रहा है ना, मैंने प्लस का साइन है, प्लस का साइन दरमियान में, तो ये नहीं करना। दिस इज अ कॉमन एरर दैट सम पीपल, so this is something that people end up doing in the exam quite often. गलती से कि साइन को लिख दिया 1 माइनस कॉस या कॉस को लिख दिया 1 माइनस साइन, यू कांट डू दैट। ये आइडेंटिटी कब अप्लाई करेंगे? सिर्फ जब साइन स्क्वायर होगा और जब कॉस स्क्वायर होगा। सिंगल पावर में नहीं आइडेंटिटी अब चलती है, ओके? टैन वाली आइडेंटिटी सिंगल पावर्स के लिए, ये स्क्वायर्स के लिए है सर, ऑलराइट? मल्टीप्लाई में तो कर सकते थे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, मल्टीप्लाई में आप पावर्स फिर अलग अलग कर सकते थे। जब प्लस माइनस हो रहा होता है तब ये नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट ट्रू, ये नहीं करना, ओके? साइन को 1 माइनस कॉस नहीं लिखना और कॉस को 1 माइनस साइन नहीं लिखना, स्क्वायर्स को सिर्फ लिख सकते। ये क्लियर है? एनी प्रॉब्लम्स? नो? Alright, so now we should be able to do some questions now that we know these identities as well and we know how to solve equations. अब हम कुछ questions करते हैं worksheet से. Now it is uploaded, but you should be getting printed copies of this in the next class as well. इसकी questions statement इतनी बड़ी नहीं होती हैं, तो हम यहाँ पे देख लेंगे, उसको समझता नहीं आएगा. Let's start with some questions from this. उस पे क्वेश्चन असाइन किया हुआ मैंने अभी कि नहीं किया हुआ? क्लासरूम पे क्वेश्चन असाइन है? Okay. Let's start with some relatively simpler questions. This is question number 4 from the worksheet. Let's look at this. All right, so we want to solve this equation. 3 sine square theta minus 2 cos theta equals minus 3 equals 0. And the interval that we're given is from 0 to 180. Now remember, whenever we are solving equations, what we have to do is we have to convert the equation to such a form that we have only one trigonometric function. Multiple functions आ रहे होंगे तो उसको नहीं solve कर सकते। हमने पहले का किया है, हम जो equation solve कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे? जब हमारे पास कुछ इस तरह की चीज होती थी, sin theta equal to something, right? Tan equals something, cos equals something. So you have one function that is equal to some constant, उसको solve कर सकते हैं, right? Now what's the problem here? We've got two different types of functions, right? We've got cos and sin, दोनों चीजें आ रही हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या साइन स्क्वायर को cos में, या साइन को cos में कर दें, cos को sin में कर दें। Okay? Now using the identities that we have just discussed, can we do it? क्या हम cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी तरह से? cos को sin में कर सकते हैं? cos को sin में कर सकते हैं? cos को sin में कैसे करेंगे?
अगर हमने cos को sin में करना होता तो हम क्या करते? cos को sin को ऐड में सॉरी नहीं अभी नहीं, cos को sin में करना है तो क्या करेंगे? Let me write down the identities here. Sin square theta plus cos square theta, that is identical to 1. This is one identity. This is the identity that we've got between sin and cos. तो cos को मैं लिख सकता हूँ 1 minus sin square theta. तो cos square को लिख सकते हैं, तो इसको क्या करें फिर? इसको पूरे को स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. And that is going to make things quite complicated, right? यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, राइट? वो तो बाहर होगा ना, इस तरह 2 होगा फिर अंदर ही आ जाएगा, वो तो एक ही बात है. 2 तो बाहर है ना, साइन को कॉस को मिस रिप्लेस कर दिया जाता है. अब मसला ये है कि यहाँ पे तो स्क्वायर रूट आ गया. अब स्क्वायर रूट को आगे सिंप्लीफाई करना इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो रादर देन डूइंग दिस, व्हाट यू शुड डू इज साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करें, बिकॉज दैट इज अ स्क्वायर. साइन में स्क्वायर आ रहा है, साइन में स्क्वायर आ रहा है, उस पर वो आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी, उसमें स्क्वायर रूट नहीं आना पड़ेगा आपको. ये कैंसिल कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता ना कैंसिल. तो 1 माइनस है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थी ना, साइन के ऊपर स्क्वायर है सर, 1 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर 1 पे तो नहीं है ना. 1 माइनस साइन थीटा के पूरे पे स्क्वायर होता फिर हो सकता था, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता. तो यहाँ पे देखें कॉस को कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, कॉस में नहीं कन्वर्ट कर सकते. ये वाली आइडेंटिटी कब अप्लाई होगी? जब साइन स्क्वायर होगा या कॉस स्क्वायर होगा. तो रादर देन कन्वर्टिंग कॉस टू साइन, व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन से लेट्स इनपुट sin square theta equal to 1 minus cos square theta. sin square की जगह पे वो डाल दें आप, तो आपको क्या मिलेगा? 3 into 1 minus cos square theta minus 2 cos theta minus 3 equals 0. And now you have an equation that is only in terms of cos. Is this all right? सिर्फ cos की terms में आ रही है. अब क्या करें? Let's simplify this. This gives us 3 minus 3 cos square theta minus 2 cos theta minus 3 equals 0, and that gives us minus 3 cos square theta minus 2 cos theta equals 0. 3 and minus 3 get cancelled. Minus भी खत्म कर दें यहाँ पे. That leaves you with 3 cos theta, 3 cos square theta plus 2 cos theta equals 0. How do you solve this equation? तो क्या करें? कॉस को कॉमन ले लें. अगर यहाँ पे कॉस को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचता है? जरूरत नहीं है यहाँ पे करने की. हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन कभी कभी करने से आसान हो जाता है, विल डू दैट, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है. आप अगर डायरेक्टली कॉस को कॉमन ले लें, यू आर लेफ्ट विद cos थीटा इनटू 3 cos थीटा प्लस 2 एंड दैट इक्वल्स 0. ठीक है? इज दिस ऑल राइट? अब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, रिजल्ट 0 के इक्वल है. दैट मींस आइदर द फर्स्ट थिंग इज इक्वल टू 0, आइदर cos थीटा इक्वल 0 और 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल 0. ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई. इनको सॉल्व कर लेंगे. आपको इंटरवल गिवन है, इंटरवल इसमें क्या दिया हुआ है? 0 से 180 तक आपके आंसर्स होने चाहिए, उससे बाहर नहीं जा सकते. दैट इज द इंटरवल दैट्स गिवन. इन दोनों इक्वेशंस को आपको अलग अलग सॉल्व करना है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन. नाउ दिस इज द केस जहां पे आप quadrant वाला मेथड नहीं यूज कर सकते. if you were to try and find the basic angle, basic angle क्या आता है यहाँ पे? 90 डिग्रीज आ जाएगा. क्वाड्रेंट्स वाला मेथड नहीं चलेगा यहाँ पे. तो आप क्या करेंगे फिर? इसमें कौन सी वैल्यूज चेक करेंगे? 90 के मल्टीपल्स इंक्लूडिंग 0. 0 ट्राई कर लें, 90 ट्राई कर लें. ग्रीन साइड पे लिखिए 0 से 180 उसने कहा हुआ है. 0 ट्राई कर लिया, 90 ट्राई कर लिया और 180 ट्राई कर लिया.
Which one of them gives you the result? 90 पे आपको आंसर मिलता है this is correct, the other two are not correct. वो आपको 0 नहीं दे रहे होते. ठीक है? So the value that you have for theta therefore is 90 degrees. That's one possible answer. Make sense? ये clear है? 0 आपने इनपुट किया उस इक्वेशन में, that doesn't work. 90 इनपुट किया, that works. 180 doesn't work. So इस इक्वेशन से आपका सिर्फ 90 सॉल्यूशन आ रहा है उस इंटरवल के अंदर. Now let's look at the second one. The second one gives you cos theta equals minus 2 over 3. Now find the basic angle. Cos alpha equals 2 over 3. What's the basic angle? Basic angle क्या आता है? Yunus? What's the basic angle? 48.18. This is the basic angle. Now you think of quadrants. कौन से quadrant में हो सकते हैं? Cos is negative in the second quadrant and in the third quadrant. But look at the interval that is given. 0 to 180. Can we go to the third quadrant at all? Third में तो हम जा ही नहीं सकते. सिर्फ second quadrant ही possible है, third possible नहीं है. Because that is outside the given interval. 0 से 180 से बाहर जा रहा है वो. आप बस second quadrant वाला angle देखेंगे. This is what you're looking for. ये क्या बन जाएगा? अगर आप यहाँ से आएंगे, theta equals 180 minus 48.18, which is 131.8 degrees. This is the second answer that we have from this. ये दो आपके answers आते हैं. Any problems? No? Clear है सबको? Abdullah? All right, let's have a look at another one. Or let's have a short break. 2-minute break. Then we do a few more questions. अभी तो शुरू हुई है trigonometry. क्या हो गया? नहीं. You can't eat or drink something in class. Now you can go. You have 2 minutes. 2 minutes means 2 minutes.
All right, let's assume all right, do this. Number 3 from the word. Remember, we have two identities, sine square theta plus cos square theta, that is identical to 1. And we have tan theta identical to sine theta over cos theta. These are the two identities that we have. You know, सब और टहल लें भाई थोड़ा सा. All right, so these are the two identities that we have. Let's look at the first equation. So in the first equation, it says you have sine theta plus cos theta. That is equal to 2 into sine theta minus cos theta. Yeah, first equation है. So show that this can be expressed as tan theta equals 3. इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है? Now, how do we start? सबसे पहले तो उसको simplify कर सकते हैं थोड़ा सा, right? So if we simplify the right hand side, it becomes 2 sine theta minus 2 cos theta. Now, you could just add or subtract the terms, take everything to one side, let's say. अगर left side पे ले जाएं, तो हमारे पास क्या बनता है? Minus sine theta plus 3 cos theta, that equals 0. This is what we get. Minus sine theta plus 3 cos theta, this equals 0. इसको tan में convert करना है. tan में convert करना है. Admits वाले नहीं. अभी नहीं. Admits वाले नहीं. Admits वाले नहीं बोलेंगे अभी. Admits वाले नहीं बोलेंगे अभी. Yeah, of course. Sorry? आपको tan में convert करना है ना? Tan में convert करने के लिए आपके पास एक ही identity है. Tan equals sin over cos. तो आपको sin over cos चाहिए कहीं पे. ठीक है? That's how you have to think. Sin over cos किसी तरह से लेकर आना है. So what we can do is, one possibility is you take sine to the other side. 3 cos theta equals sine theta. And now you divide this cos on the other side. And that leaves you with sine theta over cos theta. On the other side, you've got 3. Tan theta equals 3. This is what you had to prove. Make sense? That was two parts. This is one way of doing this. Now, there's another possibility that you should also understand, because sometimes you have to use that. एक तरीका यहाँ पे क्या था कि आप
साइन को दूसरी साइड पे लेके कॉस को वहां पे जाके डिवाइड कर दिया, राइट? Another possibility at this point could be that you just divide this whole equation by cos theta. पूरी इक्वेशन को आप cos theta से डिवाइड कर, राइट? अगर आप पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? माइनस साइन ओवर cos, दैट इज माइनस tan. cos और cos यहाँ पे कैंसिल हो गए सेकंड टर्म में. You just have to write 3 and that also gives you tan theta equals 3. So this is another way of looking at it. Rather than taking sine to the other side and then dividing like this, you could just divide the whole equation by cos. उससे हुआ क्या? एक टर्म tan में कन्वर्ट होगी और दूसरी टर्म में वो कैंसिलेशन होगी. या इसी की बात कर रहे हैं, इसके बाद इस स्टेप की बात कर रहे हैं ना. इस स्टेप की जगह हम ये कर सकते हैं. This could be another possibility. All right, yes sir. ये क्लियर है? अब सेकंड पार्ट में वो क्या कहते हैं? अच्छा इसमें ना आई डिड नॉट मेंशन वन थिंग देयर. ये जो दो आइडेंटिटीज हैं, आपने एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखनी है. सेकंड आइडेंटिटी के अंदर ना you have sine over cos. Now this is true for all values of theta, but there is one exception, and that is when cos theta is equal to 0. So basically denominator 0 नहीं हो सकता. Denominator 0 हो जाएगा तो वो undefined हो जाएगा. Denominator 0 हो जाएगा तो ये पूरी आइडेंटिटी जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगी एक तरह से, ठीक है? सो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसकी एक कंडीशन है इस आइडेंटिटी की, cos थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? समटाइम्स इन इक्वेशंस यू विल बी यूजिंग दिस आइडेंटिटी. एंड पे आपके पास कभी-कभी एक पॉसिबल आंसर आ रहा होगा cos थीटा इक्वल 0. आपने उसको इग्नोर करना होगा. यू कैन नॉट कंसीडर दैट एज एन आंसर बिकॉज़ दिस इज नॉट पॉसिबल. cos थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. अब जब भी आइडेंटिटी यूज करेंगे, रिमेंबर cos थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती वहां पे कहीं, ठीक है? ऐसा अच्छा 90 भी हो सकती है, 270 भी हो सकती है. देयर आर मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा. वो भी अनडिफाइंड. अनडिफाइंड इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड. अनडिफाइंड इज नॉट अ नंबर. इसको आप इक्वेट कर सकते हो इस तरह से. इस तरह infinity is not equal to another infinity. Infinity भी different होती है, infinities भी different होती है, right? So one infinity might be bigger than or smaller than another infinity. उसको भी आप equate नहीं कर सकते. Is this all right? Any problems? Okay, so that was the first part. Second part में वो कहते हैं hence solve this equation for theta between 0 and 360. अब ये equation क्या है? आपने इसको ऑलरेडी उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हुआ है. tan theta equals 3. उसको सॉल्व करना है आपको essentially. All right? वही सेम इक्वेशन है जो फर्स्ट पार्ट में थी, वो कह रहा है उसको सॉल्व करें. नाउ यू ऑलरेडी डन ऑल ऑफ दिस वर्क, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है टाइम के अंदर, तो अब सिर्फ आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. दैट्स ऑल यू गॉट टू डू. ओके, so you say tan theta equals 3, the interval that we're given is from 0 to 360. ये इक्वेशन सॉल्व कर लें. How do you solve this? You find the basic angle. Tan alpha equals 3. What's the value of alpha? 71.56 degrees. And then you look at quadrants. These are the quadrants that you have. Tan is positive, that's the first quadrant or the third quadrant. इन दोनों के अंदर values देख लें थीटा की क्या आती है. In the first quadrant it's 71.56 or 71.6, you can round it off.
In the second quadrant, it's 180 plus 71.56, which is 251.56. This is another possible answer. ये आपके दो solutions होंगे. Make sense? Any problem? Now, this will sometimes happen, maybe in an exam, that you're not able to do the first part of a question like this. Let's say आपसे first part में prove नहीं हो रहा किसी तरह से. Let's assume ये तो काफी आसान था, but sometimes you end up getting a more difficult first part, and you might not be able to figure that out. अब देखिए first part का उसने आंसर आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कि वो उसमें कन्वर्ट हो जाता था. First part was 2 marks, हो सकता है next part जो है उससे ज्यादा marks का हो. अब next part फिर भी attempt कर सकते हैं. अगर आपसे एक part नहीं होता in an exam, you are not going to skip the whole question. आप next part फिर भी कर सकते हैं. In cases like these, जहाँ पे उसने आंसर आपको ऑलरेडी बताया होता. Okay? Second part तो बिल्कुल आसान है, बहुत ही simple सा है. तो आप second part फिर भी कर सकते थे, even if you are not able to figure out the first part. ठीक है, तो एग्जाम में अगर कोई इस तरह की चीज आती है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा होएगा. फर्स्ट पार्ट में ना आपसे कोई चीज प्रूव करने के लिए जाएगा, शो करने के लिए जाएगा, और सेकंड पार्ट में फिर आपको उसको यूज करना होगा. P1 में फिर भी थोड़ा सा आसान है. P3 में कभी कभी ऐसी आइडेंटिटीज आ जाती हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो नहीं प्रूव होती इतनी आराम से. तो एग्जाम में a lot of people are not able to figure that out, तो वो पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं उसकी वजह से. Next parts are mostly easier than the first part in these questions. तो आपने next part फिर भी करना है. अगर आपसे first part let's say partial हुआ है, पूरा नहीं हो रहा, आपने उसको दरम्यान में छोड़ दिया, तो आप आंसर यूज करके next part कर लेंगे फिर. Is that okay? यहाँ पे आपको पता है tan theta equals 3 is the answer. आप उसको directly use कर सकते हैं for the next part. All right, so that was question number 3 from the worksheet. Let's have a look at another one. You clear? Okay, let's try another one. जो चीजें हम कर लेंगे तब तक मैंने क्या कहा था आपको पहले बताया नहीं, पहले क्या कौन से टॉपिक्स बताए थे? इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसमें जाहिर है बाकी चीजें आपको आनी चाहिए. इन एनी केस सर्कुलर मेजर एंड ट्रिगोनोमेट्री. सर्कुलर इक्वेशन आएगा ना, लेकिन सर्कुलर इक्वेशन करने के लिए आपको बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, इसके बगैर होता नहीं है. P1 सिर्फ, P3 नहीं आएगी. वो भी कर लें. ओके, तो इब्राहिम की पुरजोर फरमाइश के ऊपर हम P3 ट्रिगोनोमेट्री भी ऐड कर लेंगे. All right, let's try this. This is question number 1 from the worksheet. ये देखते हैं. Now in the first part, we have this equation: sine square theta plus 3 sine theta into cos theta, that equals 4 cos square theta. ये equation है. Now I'll give you 1 minute to think about this. मैं कहा show that this can be written as a quadratic equation in tan theta. उसको हमने कन्वर्ट करना है किसी ऐसे फॉर्म के अंदर जिसमें सिर्फ tan आ जाए और बाकी सब कुछ एलिमिनेट हो जाए. Okay, so think about it. You can discuss with each other and convert it to a tan form. Not right now. Sine square theta plus cos square theta is identical to 1. Just give me a minute. And the other identity is tan theta identical to sin theta over cos theta. ये दो identities हैं, बोला नहीं है, बोले बगैर. I'll give you all 1 minute to think about it first. Question कुछ पूछना है, कुछ आंसर करना है? 1 मिनट लें सब लोग. अभी 1 मिनट लें सब लोग. Think about it. 1 मिनट सबर में कह रहा हूँ. Think about it. Then we'll think about it. नहीं कुछ नहीं. tan में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसका मतलब है साइन भी नहीं होना चाहिए उस फाइनल इक्वेशन में, कॉस भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ tan होना चाहिए.
tan में कन्वर्ट करना है कंप्लीटली। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना ही नहीं है, नहीं कुछ भी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ सोचें। सिर्फ सोचें, अभी सोचें सर। यूनस कॉस से, अच्छा अब अब्दुल्ला, अब आपने दिखाना नहीं है उसको। यूनस डिवाइड बाय कॉस करें और देखें क्या होता है, करें। नोटबुक किधर है आपकी, देख देख क्या रहे हैं बैठ के, करें कॉस से डिवाइड करें, देखें क्या होता है। अब्दुल्ला it's an important skill to have, to be able to control yourself, to have some control on yourself. Yes. ओके जी अहमद, आप क्या बता, क्या कह रहे थे? कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं, ओके। अहमद ये होता है जब आप जो है ना सोचते नहीं है, और बस सोचने से पहले एक मिनट, बोलना नहीं है, बोलना नहीं। रेज योर हैंड फर्स्ट बिफोर यू स्पीक, ओके? यस। अच्छा क्या करें, क्या इसको क्या करें? ये कैसे होता है? विच अलजेब्रा इज दिस कि मैं उसको जाके उधर जाके डिवाइड कर कौन? अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या करें? इसको कॉस को डिवाइड करते हैं, कॉस को डिवाइड करते हैं, ओके। सो ये जाके डिवाइड हो गया, ये बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। यहाँ पे क्या बचा? 3 sin थीटा। तो यहाँ पे क्या होएगा? ये नहीं cos से डिवाइड होएगा, ये भी तो cos से डिवाइड होगा ना। पूरी इक्वेशन होनी चाहिए ना, ये तो नहीं कर, सिर्फ cos उधर कैसे चला गया वहां पे? अकेला cos उधर कैसे चला गया? प्लस हो रहा है, वो अकेला वो कैसे चला जाएगा वहां पे? कैसे हो सकता है? आप ये कह रहे हैं कि आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स 3। आप कह रहे हैं अच्छा ये x जाके ना उधर डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स 3 ओवर एक्स। हाउ डज दैट मेक सेंस? जो भी चीज करनी है पूरी इक्वेशन पे करनी है ना। ओके सो दिस डजंट वर्क, व्हाट एल्स कुड वी डू? यस, sin to the other side, which sign? This one? Square. Okay, if we take sin square to the other side, 3 sin theta cos theta, we take this to the other side and that leaves us with this. What do we do now? Abdullah, I'm not just interested in the answer, I'm interested in the fact that you're all able to think about it. If you directly tell the answer, they will not have the chance to think about it. Yes, Asi. क्या करें? राइट साइड पे कैसे है? cos square theta से डिवाइड हो सकता है? Have you thought about yourself या you overheard it? कुछ सोचा? Good. क्या करें? cos square theta से डिवाइड कर दें। क्यों? क्यों अब्दुल्ला? Yes. No, I'm asking I'm asking you to stop speaking for now. अभी नहीं बोलना. I know you know this. I know you. No, he did. I'm telling you to just not speak for now, right? I know you know it. I know Ahmed knows it. I know Nizam knows it. I know Hassan knows it. I want to give others a chance as well to get to your level as well, right? Yes. So here, आप क्या कह रहे थे? cos square थीटा से डिवाइड कर दें। क्यों डिवाइड कर दें? सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर आ रहा है, cos स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा आ रहा है। अभी जो tan वाली आइडेंटिटी है, tan थीटा आइडेंटिकल टू साइन ओवर cos, अगर हम इसकी दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं इस आइडेंटिटी को, तो ये आइडेंटिटी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज आइडेंटिकल टू व्हाट?
sin square theta over cos square theta. That makes sense? अगर मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूं, it becomes tan square theta identical to sin square theta over cos square theta. And now think about it. If we were to divide this whole equation, इसलिए मैंने आपको वो दूसरा मेथड बताया था यहाँ पे कि आप इसको इस तरह भी सोच सकते हो, पिछली वाली इक्वेशन को, कि पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दो. क्यों? क्योंकि tan में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे उससे हो गया. अब यहाँ पे इस केस के अंदर अगर आप पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड करते हैं, लेट्स से अगर पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता? यहाँ पे साइन ओवर कॉस तो tan में हो जाता, लेकिन फिर भी एक साइन बच गया. इधर भी आपके पास एक साइन बच गया और इधर भी एक कॉस बच गया, तो tan में नहीं कन्वर्ट होता वो पूरा. बट इफ यू डिवाइड द होल थिंग बाय cos स्क्वायर थीटा, इस पूरी इक्वेशन को अगर आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, नाउ हाउ डज दैट हेल्प? Sin square over cos square, what does that become? That becomes tan square theta. Now look at the second term. Cos and 1 power of cos here, they get cancelled, and we are left with 3 sin theta over cos theta. What's that? That's tan. We have 3 tan theta. On the right side, cos square and cos square get cancelled, and we're just left with this. And everything gets converted to tan this way. That is what Abdullah was saying. All right? You divide the whole thing by cos square से आपने divide कर दिया पूरी इक्वेशन को, अब सब कुछ tan में convert हो गया. Just one single step. All right? Now it's a quadratic equation. उसने कहा था पहले आपने इसको quadratic में convert करना है, आपने कर लिया. This was the first thing. Now in the second part, they ask you to solve this equation. अब इसको solve कैसे करेंगे? Let's look at the second part. Hence or otherwise, solve the equation in part 1 from 0 to 180. From 0 to 180, what's the equation? Tan square theta plus 3 tan theta minus 4 equals 0. Or theta is between 0 and 180 degrees. Now it's a quadratic equation. How do we solve this? Ahmed. Common ले लें? Middle break कर लें. Yes. So in order to make this slightly simple, हम यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ना substitution use कर लेते हैं, and that is going to help us think about it relatively easier. ये quadratic equation है, directly भी हो सकता है, directly भी कर सकते हैं, but if you use a substitution here, it makes things slightly simpler. आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? Let another variable, any other letter, कोई भी और letter use कर लें. यहाँ पे u use कर लें, t use कर लें. Let's say t से मैं represent कर लेता हूँ tan theta को. Okay? If I do that, what does it convert to? This becomes t square plus 3t minus 4 equals 0. Now this is a quadratic equation that we know how to solve, right? अब इसकी factorization आपको दिखानी पड़ेगी, quadratic formula में values input करके दिखानी पड़ेगी. It becomes 4t minus t minus 4 equals 0. You get two factors from this. T plus 4 and t minus 1, that gives you t equal to minus 4 or t equal to 1. And now you put that substitution back. You say tan theta either equals minus 4 or tan theta equals 1. अब इन दोनों equations को आपने solve करना. Is that okay? तो इस तरह की quadratic equations में आप क्या कर सकते हो? आप substitution use कर सकते हो. हमने t use किया, यहाँ पे कोई और letter भी use कर लें, that's also fine. Now, what do we do after this? We use basic angle. Basic angle ये क्या आता है? 76.96. इसमें अगर हम quadrants बनाए यहाँ पे, कौन सा quadrant हो सकता है? माइनस किधर होता है? फर्स्ट में नहीं होता, सेकंड एंड फोर्थ.
लेकिन आप देखें उसने इंटरवल इसमें क्या दिया हुआ है 0 से 180. इसका मतलब 4 तो हो नहीं सकता. You can only be here. This is your alpha. So the value of theta therefore is 180 minus, which is 103.0 degrees. That's one possible answer. दूसरे से आपके पास क्या आता है? Tan alpha equals 1. Alpha is 45. Now, which quadrants can you be in this case? Tan is positive. First and third. Third is outside the given interval. So it's only the first. So the answer that you get from this is theta equal to 45 degrees. ये आपके पास इसके दो आंसर्स आते हैं, 45 degrees and 103 degrees.